So why it only interacts with the few nucleon? What could be the possible reason? As if I ask you in a very simple way कि क्या possible reason हो सकता है कि ये थोड़े से न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करते हैं, सबसे नहीं करते हैं. न्यूक्लियस इज हैविंग अ बिग अमाउंट ऑफ न्यूक्लियन. एक अगर नंबर 100 है तो इट हैज सो मेनी प्रोटॉन्स, 40 प्रोटॉन्स होंगे, 60 न्यूट्रॉन्स होंगे, but the incoming particle only interacts with very few. So what could be the reason? What could be the reason? Any guess? या वैसे लिखा है, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा. The incident energy is more than 20 mega electron volt per nucleon. So energy value is written there. But उस energy value से meaning निकालना है कि why it is interacting only with the few nucleons. Okay, so interaction is something like you need to understand in the wave picture form. So the incoming nucleon have a matter wave, and that matter wave will have a wavelength, and that wavelength should be around 1 Fermi. Then only it will interact with very few nucleon. If it is more than a Fermi, then it will interact with whole of the nucleus, because it will see, if the wavelength is very large, then it will see whole of the nucleus. But if the wavelength is very small, around 1 Fermi, then it will see only few nucleon. तो क्या करेगा? When it is entering or when it is going near to the nucleus, it will only diffract or scatter or do certain things as per its matter wavelength. If matter wavelength is 1 Fermi, so it cannot interact with a new nucleon which is sitting at 6 Fermi or 7 Fermi away from that particular projectile. So it will interact with a radius of 1 Fermi only. So it will interact with very few nucleon. So the first important point that we have to remember that de Broglie wavelength, or जिसको आप matter wavelength भी कहते हो, तो de Broglie wavelength should be around a Fermi for the incoming particle. So you can easily calculate, if the energy is 20 mega electron volt for a proton, the de Broglie wavelength is 1 Fermi. You can easily calculate. If you have a helium, then you have a 4 nucleon. So you have to increase the kinetic energy so that per nucleon you have a 20 mega electron volt, so that your de Broglie wavelength is that much, because wavelength will depend upon the h upon p होता है ना, तो mass पे भी depend करेगा, mass and velocity both. So that we have to think कि जितने भी de Broglie wavelength अगर 1 Fermi है, तो that will perform a direct nuclear reaction. And how it is being done. So let us see what happens during a normally. What happens normally? This is one class of nuclear reaction. What it has done, it came to the nucleus at the peripheral, means outside the nucleus, means at these area, it will interact with any one of the nucleon. It can pick up one of the nucleon, and it just pick one neutron, it goes away. So this is example of PD reaction. Proton was the incoming particle, projectile, and D was the outgoing particle, that is deuteron. So this is a pickup reaction, a kind of transfer reaction. Transfer reaction में हमने starting में classification में किया. Transfer reaction is actually when you have when a projectile transfers certain nucleon to the nucleus, or it can take up certain nucleon from the nucleus also. So both are considered as a transfer reaction. So some transfer is being done between projectile and target. So here what happens, proton is coming, it took one neutron from the nucleus and it goes up. So this is a simple example of a pickup reaction, or you can say direct reaction. Direct reaction में category है transfer reaction. Transfer में भी हमारा एक category है pickup reaction, where it pick up one nucleon. So example exam में आता है, give one example. तो PD reaction के आपको बहुत सारे example मिल जाएंगे, where you have a proton as a projectile. You can use aluminum, you can use carbon, you can use many different light elements, all heavy elements also, and neutron is coming out. So that is one of the कई बार दो example लिखना होता है, तो दो reactions आपको लिखने होंगे. The more important point is the incident energy should be more than 20 mega electron volt per nucleon. This should be there. This is the, because why we require this much? Because the momentum has to be more, and if momentum is more, then its de Broglie wavelength is less than a Fermi or around Fermi. The reaction time, how much time does it take to do this reaction? Means how much time that spares within the
nucleus, the projectile, how much time spares within the nucleus. So that is roughly 10 to the power of minus 23 seconds. This is the order, and this order is actually the strong force order. जो strong force का reaction होता है ना, वो इसी order का होता है. तो nucleus proton आया, उसने attractive force एक neutron के साथ play किया और it test took away. So this is something like a strong interaction is going on for a direct nuclear reaction. Then third, next point, in this point, it is sharply peaked angular distribution of outgoing particle. Means the particle which is coming out, for example, this one, that is coming out at certain angle with respect to the direct beam line. So there is a certain angle. So this direct beam line is here and it has a certain angle. This angle is very defined, and that angle will depend upon the kinetic energy of the incoming particle. That we will do in the question. हम tutorial class में next में करेंगे कि how we can find the angle, at what angle the particle will come out, and that will depend upon the energy of the, means you can say energy of the incoming particle also and outgoing particle. So it is a very angular, means if you try to keep a detector throughout the nucleus, means in a circular way 360 degree पे आपने detector लगा दिए हैं, but you will only find the outgoing particle at certain angle only. You don't find particle at every angle. So angular distribution will have a sharp peak at certain values, and that will be depend upon the kinetic energy of the incoming particle. So this is a broad classification of a direct nuclear reaction. So let us see another nuclear reaction, which is called as stripping nuclear reaction, which is also a transfer reaction. So that will appear. Yes, this one. This is also an example of transfer reaction, but this is called deuteron. इसलिए क्या किया, deuteron use हो रहा है यहाँ पे, but deuteron को अगर remove भी कर देते हो तो stripping reaction is the class. Stripping reaction means this has been stripped and one of the nucleon has been given to the nucleus. पिछले केस में पिकअप क्यों था? Because the projectile has picked a nucleon from the nucleus. इस केस में stripping क्यों है? Because the projectile has been stripped and one of the nucleon has been given to the nucleus. So let us see first the thing, and rest of the thing is same. A neutron has been transferred to the nucleus and a proton is going out. So deuteron, this is DP reaction. So PD reaction, उसका reverse हो गया DP reaction. So PD reaction, DP reaction, any one will be exothermic and any one will be a endothermic. Obviously, जिस भी reaction का opposite करोगे, अगर exothermic है, so that will become a endothermic. And the rest of the thing, because it is a class of direct reaction only, so you need this much of energy. Your time will be around this much, and it will be sharply peak. Means what angle this proton is coming out, that will depend upon the kinetic energy of incoming projectile particle. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes. Animation दोबारा देखना है इस दोनों cases के लिए in a one go. Yes. Then we will go to the compound nucleus. Compound nucleus थोड़ा सा और tricky हो जाता है, and we need to write something else also on that. So if you want to see, just I will start from starting. This is a pickup reaction where it picks a nucleon from the nucleus and it goes away. The angle where it is coming out, that will depend upon the energy. So that is unique. This is a deuteron stripping reaction where the nucleon is being transferred to the nucleus, one of the nucleon. Okay. Now we come to the next one, that is your compound nucleus reaction. Okay. What is a compound nucleus? Actually, the name is not compound nucleus reaction, compound hyphen nucleus. This is the name. बुक में कई बार आपको बुक में मिल जाएगा जहाँ पे compound nucleus reaction लिखा होगा. So you don't able to understand कि why the compound word is there. But this is a compound nucleus reaction. Means there is a formation of a compound nucleus. This is a one entity which is being formed during the reaction. तो जब रिएक्शन हो रहा है तो एक न्यूक्लियस नहीं, एक कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाई दिस हाइफन इज देयर. द कंपाउंड न्यूक्लियस
रिएक्शन भी कह देते हैं, कई बार बुक में आपको मैकेनिज्म भी मेंशन्ड होगा. Okay, the incident energy is less than 20 mega electron volt per, which is required. Means now what we have to think that the projectile should interact with whole of the nucleus. अभी हमारा एम क्या है, प्रोजेक्टाइल को इंटरेक्ट किससे करना है, न्यूक्लियन से नहीं करना है, होल ऑफ द न्यूक्लियस से करना है. इफ इट इज होल ऑफ द न्यूक्लियस देन योर de Broglie wavelength should be large. If de Broglie wavelength is obviously the de Broglie wavelength should be large, at least a size of this diameter. यानी अगर 3 फर्मी 4 फर्मी 6 फर्मी के रेडियस है तो उनके डबल वैल्यू का आपका क्या होगा, इसके de Broglie wavelength अगर बड़ा है then it will able to see whole of the nucleus. So you can easily predict ki if a proton is there, how much energy is required to have a 6, 7 or 10 or 8 Fermi kind of de Broglie wavelength. That will be come out less than this. So 20 मेगा से अगर कम है, यानी कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन लो एनर्जी का रिएक्शन है, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन आपका हाई एनर्जी का रिएक्शन है. हाई भी उतना हाई नहीं है जो हम नॉर्मली एनर्जी क्लासिफिकेशन करते हैं ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्लासिफिक, वो वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस रिस्पेक्ट में. मींस लेस देन 20 इट विल फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, इफ इट इज मोर देन 20 इट विल गो फॉर द डायरेक्ट रिएक्शन. ठीक है, तो एनर्जी अगर लो है तो de Broglie वेवलेंथ भी आपका ज्यादा है, और ज्यादा है तो इट विल इंटरैक्ट, इट विल सी होल ऑफ द न्यूक्लियस. When it is going towards the nucleus, it will see whole of the nucleus. So what will happen then? Time is a bit slow. जो डायरेक्ट रिएक्शन था थोड़ा फास्ट था, इसका टाइम थोड़ा सा स्लो है, बहुत स्लो नहीं है. अगर आपके लिए देखो तो -18 और -23 दोनों सेम ही नंबर है. इट डजंट मैटर कि -15 भी -8 भी हो जाएगा तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करेगा. बट एज पर रिएक्शंस दिस इज अ स्लोअर रिएक्शन. इट इज नॉट अ फास्ट रिएक्शन, दिस इज अ स्लो रिएक्शन. तो -23 पे हो रहा था और ये अराउंड 10⁵ टाइम्स स्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर डायरेक्ट न्यूक्लियस. दिस इज वन डिफरेंस. Energy difference is there, one time difference is there. And first let us see what happens in the compound nucleus, then we can discuss the last point. So the proton get inside the nucleus. Now the proton is not coming out directly, it just get inside the nucleus. Start interacting, means it start moving within the nucleus and interacting with several nucleon at a time. डायरेक्ट में क्या था, इंटरेक्शन इज डन विद द फ्यू न्यूक्लियंस ओनली. नाउ इन कंपाउंड न्यूक्लियस इंटरेक्शन इज डन विद द होल ऑफ द न्यूक्लियस, मींस इट इज इंटरैक्टिंग विद, इट इज colliding with several nucleons within the nucleus. It will collide, it will do a random motion, and after that it will stop. Means it is getting embedded in the nucleus. It is getting embedded in the nucleus. Now this nucleus is called as compound nucleus. This nucleus where your extra proton has been a part of this previous existing nucleus, this extra proton plus a previous existing nucleus combined form is called as compound nucleus. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Clear. So this compound nucleus, now when you have put an extra proton within the nucleus, then that will go into excited state. This nucleus is not at all stable. So what will happen? It is not stable. You can see the glow is there in the nucleus, a bit glow. It will do for certain time. After that, it can emit the 1 or 2 or 3 nucleon. कई बार वो एक एमिट करता है, कई बार 2 करता है, कई बार 3 करता है, डिपेंड्स अपॉन द what the decay process it is following and how the decay. And one more thing, when you have the compound nucleus, actually when the compound nucleus has formed, it has forgotten its initial energy of the proton. Proton के पास क्या एनर्जी पहले था जब कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो, when the proton become a rest or become a part of the nucleus, the nucleus forgot ki what was the energy of the proton. So the outgoing particle energy and angle will not be the it will not depend upon the previous energy or projectile energy, because that has been lost. When the compound nucleus has formed,
They don't know what was the energy of the proton before that. They have formed a nucleus. उससे पहले क्या एनर्जी था भूल गए वो. अब जब भूल गए तो now the decay process will happen, and decay process will not depend on the previous case. So it will be independent. It will be a new decay process. Whatever happens, you can have an emission of 2 nucleon. You can have an emission of 1 nucleon. You can have an emission of 3 or more nucleons, and they will come out at different angle. Means what will happen? That angular distribution will be isotropic. Everywhere you will find the nucleon is coming out. बिकॉज यू हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन. पहले से क्या है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम था, क्या मेरे पास एनर्जी थी, क्या लीनियर मोमेंटम था, सब भूल गए क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है. अब जब डीके होगा तो कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे डीके होगा, दैट विल डिसाइड की विच पार्टिकल इज गोइंग टू गो आउट एंड हाउ मच एनर्जी इट विल कैरी एंड एट व्हाट एंगल इट इज गोइंग टू being ejected from the compound nucleus. Is it clear? The process is clear? Process is clear to you? Yes, sir. हाँ, या पूछना है कुछ? Yes, sir. हाँ बोलो. प्रोसेस इज क्लियर, इसके लिए यस बोला ना, मुझे लगा यू वांट टू आस्क समथिंग. Clear. ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. तो बेसिक डिफरेंस में आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, और 4 से ज्यादा लिखने भी नहीं है. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेबल के फॉर्म में यू कैन राइट. The first difference between direct and compound nucleus reaction is the direct indirect reaction. डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन भी कई बार नहीं कहते हैं बुक में, उसको डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं. न्यूक्लियर वर्ड भी उसमें से रिमूव कर देते हैं. इट इज ओनली डायरेक्ट रिएक्शन. So in direct reaction, what happens? The projectile interact with only few nucleons of the nucleus. Compound nucleus, the projectile interact with whole of the nucleus, or you can say it interact with most many nucleon within the nucleus before becoming rest or before becoming part of the nucleus. It is doing a random collision with many nucleons within the nucleus. Second is the incident energy. The incident energy per nucleon must be more than 20 mega electron volt, so that it would de Broglie, so that your de Broglie wavelength should be less than a Fermi for the direct reaction. And if your de Broglie wavelength is more, it means you need less energy because it is inversely proportional. So momentum inversely in a lambda. So you need a less energy. Means if it is energy is 20 mega electron volt or less than that value, then a compound nucleus could happen. A compound nucleus mechanism kind of reaction could happen. This is the second point. The third point is interaction time. The interaction time for the direct reaction is 10 to the power of minus 23. And the interaction time for the compound nucleus reaction is 10 to the minus 18 to 10 to the minus 16. So around this much of time is needed for the nucleus. The fourth point is that in direct reaction, you have a sharp peak at certain angle for the outgoing particle. So angular distribution is peaked at a certain angle. किसी angle पे आपको particle मिलेंगे, किसी पे नहीं मिलेंगे. But in this, it is uniform, or you can say isotropic. Isotropic means everywhere you can find the particle. It doesn't depend कि भाई इसी angle पे 30 degree पे आना है या 40 degree पे आना है. It doesn't matter. So it can be in anywhere. Because this is a something like a decay process. जैसे आपने रेडियो एक्टिविटी में देखा, decay में क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस का करंट स्टेटस उसका है, जो भी काइनेट उसके एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है, whatever the angular momentum, whatever the thing is there, it will do the decay as per that particular thing. तो वहां पे decay के बाद सब कुछ आपका कंजर्व होगा, that is there, but you don't know the particle will come at what angle and of what energy and how many particle will come. This also we don't know exactly. So आपको मैंने डायरेक्ट रिएक्शन के तो एग्जांपल दे दिए, पीडी रिएक्शन और डीपी रिएक्शन. पीडी के आपको 2 रिएक्शन बुक में से मिल जाएंगे, किसी भी 2 डिफरेंट रिएक्शंस दैट यू हैव टू राइट, एंड डीपी रिएक्शन के भी आपको 2 मिल जाएंगे. तो नॉर्मली एग्जांपल्स लिखने को आता है, देन यू कैन राइट दैट. बट फॉर this compound nucleus we have to see a curve, and that curve is not so simple to understand, but उस curve को हम एक बार चेक करते हैं.
or instead of writing on the word file, I will share the curve which is of the crane only. ठीक है, और जो कर्व है वो किसका है आपको पता चल जाएगा, who has done this experiment, and I just share that page only. बना नहीं रहा हूँ, बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, but I will just share that on the from the crane only. Let me just open that. This one, and they have written that also. In the compound nucleus model of a nuclear reaction, is assumed that the relative probability of decay into the specific state of a final product is independent of means of formation of the compound nucleus. This is one of the line which is very important. This is the reaction. A plus X forms a compound nucleus and it just become a Y plus B. Reaction to X or YB का ही हो रहा है. This is the starting reactant and this is the product. But in between there is a time for this also. इसके फॉर्मेशन का टाइम है और ये टाइम जो ले रहा है ना वही आपका स्लो कर देता है रिएक्शन को. इट फॉर्म एंड इट टेक सर्टेन टाइम, इट स्टे फॉर सर्टेन टाइम. That is why this reaction is slow. And in what form of decay means relative probability of decay into a specific state, means it will decay into this state or it will decay into that state. That is independent. That is independent of the means of formation. किस क्या रिएक्टेंट आपने यूज किया एक कंपाउंड न्यूक्लियस को बनाने के लिए, इट डजंट डिपेंड कि व्हाट काइंड ऑफ डिके इट विल फॉलो. ठीक है, सो इट जस्ट फॉरगेट, देखो फॉरगेट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. तो इनिशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम सब भूल जाता है. कंपाउंड न्यूक्लियस एक बार फॉर्म हो गया तो प्रीवियस सारे केसेस इट हैज बीन इरेज्ड. So now the decay has to be done and decay will depend upon the current state of the nucleus. So this is example. So this is a compound nucleus which don't exist for a longer duration, but it form for a shorter duration. And this can be formed, means this is a excited state of a Zn. Zinc का एक particular excited state है जो कि भी zinc 64 का है. तो एक particular excited state है. Means you have to form this nucleus of a certain excited state energy. And that can be formed by two different process. ये भी वही बना रहा है और ये भी वही बना रहा है. These two different initial formation means these two different reactant, they form same kind of compound nucleus. Means there is a same kind of Zn will be formed of a 64 of a certain excited state. If you do the reaction with this one and if you do the reaction with, there is a calculation also. There is a calculation also, but वो calculation आता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ. कि अगर आपको इसकी एनर्जी पता है तो you can easily calculate how much kinetic energy you are required for the proton or required for the alpha. दोनों की सेम नहीं रख सकते हो, इसकी अलग होगी इसकी अलग होगी, और ये बम्बार्ड करेंगे इन पार्टिकल्स को एंड दे विल फॉर्म दिस वन. तो देयर इज अ कैलकुलेशन आल्सो, देयर इज अ नॉट सिंपल वे कि भाई ऐसा होता है कोई भी प्रोटॉन ले लो हिट करेगा तो यही बनना है या कोई भी अल्फा यही बनना है. नो, there is a perfect value of energy, kinetic energy of the for the proton, and there is a perfect value for the alpha also, how much energy you have to use. So they will form this nucleus. At the end this can decay into any of the three. जरूरी नहीं कि ये बनेगा. It is not compulsory कि यही decay process होगा. It is not compulsory कि यही decay process होगा. It is not compulsory. It can decay into this, it can decay into this, it can decay into this. If you have 100 of protons bombarding a copper, 100 of Zn is formed
and maybe this is 30 times you get this one, 40 times you get this one, and 30 times you get this one. So there is no rule, there is no exact rule कि ये कितने बनेंगे. इसलिए क्या relative probability for the decay into specific state of final product is independent of mean of formation. आपके इनिशियल कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, किस तरीके से आपने बनाया, इवन प्रोटॉन ही नहीं, आपने अल्फा से भी बम्बार्ड किया निकल को, then also it will form and can decay into any of these three. But they have a relative formation because the decay process of this to these state have certain relative you can get the idea कि भाई ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा, but there is, but the probability of decaying into any specific state, it does not depend upon the formation, but it will only depend upon the how the compound nucleus is, what the compound nucleus has been formed. So let us go to the curve, and this curve is again the cross section. हमने cross section अब पढ़ लिया कि क्या होता है. Cross section क्या है? Your how many particles are coming out at इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. How many particles are coming out at a certain time, any given time, to the detector. That is what we are saying. और वो जो कितनी quantity है उससे हम cross section की value निकाल सकते हैं. If we know how many particles are coming out, how many particle has been used as a projectile, and what is the target density or target, how many atoms are there or how many nucleus are there in the per unit area. If you know these factor and what is the thickness of the target, you can find the d sigma by d omega. And after finding d sigma by d omega, if it is not depending upon the angle, then you can integrate that and you will find 4 pi d sigma by d omega, and you can find the total cross section. Total cross section of reaction is being plotted here. ठीक है, ग्राफ में 6 different curve हैं, and we will see how these curves are being. And first let me show you who has done this work. SN घोषाल, जिसकी बुक मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली थी कि ये बुक खरीद लो. SN घोषाल का वर्क अगर क्रेन में छपा हुआ है, एक अंडर ग्रेजुएट बुक है, तो इट इज आपका अगर वर्क किसी भी आगे जाके रिसर्च का वर्क अगर आपका किसी थीसिस में यूज होता है तो दैट इज नॉट ऑफ अ बिग रिलेवेंस. इट इज यूज ऑफ रिलेवेंस फॉर अ सर्टेन कम्युनिटी जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए यूज है. अगर वो मास्टर्स के बुक में आ जाता है देन योर वर्क इज अ गुड रिलेवेंट. मास्टर्स के बुक में आ गया तो अगेन यू हैव अ बिगर कम्युनिटी विच इज रीडिंग योर आउटकम. And if it comes into undergraduate, then your work is very good. Undergraduate people are more. ज्यादा लोग अंडर ग्रेजुएशन करते हैं ना, कम लोग मास्टर करते हैं, फिर कम लोग पीएचडी करते हैं, तो कम्युनिटी साइज इंक्रीज. एशन घोषाल का जो रिजल्ट है दैट इज बीइंग पब्लिश्ड इन द अंडर ग्रेजुएट बुक, सो दैट इज अ गुड वर्क. And if your work published in any school syllabus, then your work is really very big kind of thing. Means it is you have done a very fantastic job. अगर आपके स्कूल में छप गया आपका काम, then you are means school is a very elementary education. Means everyone has to read that. तो आपके वर्क कहाँ पे मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके वर्क का वैल्यू होता है. स्कूल में आकर छप गया बुक्स में, 12th 11th में छप गया, 6th में छप गया, तो इट मींस इट इज वेरी एवरीवन हैज टू रीड दैट. ग्रेजुएशन में छपा तो सम ऑफ द पीपल हैव टू रीड दैट. मास्टर्स में थोड़े से फ्यू हो गए. पीएचडी में छप रहे हैं, पीएचडी में यूज कर रहे हैं आपके वर्क को, तो इट इज मच लेस. सो दिस इज गुड वर्क. इसलिए मैंने एसएन घोषाल मैंने बोला भी होगा कि क्रेन और एसएन घोषाल आप परचेज कर सकते हो. दैट बुक विल हैव अ सर्टेन गुड थिंग. ओके, नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द एक्सेस. वैसे एग्जाम में अगर कर्व बनाने को आता है कि एक्सप्लेन ओनली कंपाउंड न्यूक्लियस ऑफ 10 मार्क्स, देन यू हैव टू मेक दिस कर्व, बिकॉज एग्जाम्पल भी लिखने को आएगा, कंपाउंड न्यूक्लियस समझाने को भी आएगा, एंड डिस्कस द फ्रॉम अ any picture diagram or any outcome of the compound nucleus reaction. So you have to need to plot this particular curve. This is the alpha energy is plotted on this side, जो x axis है. और comparison के लिए to have a comparison with or proton reaction means अल्फा से तो रिएक्शन हम कर ही रहे हैं, अल्फा को हम निकल से बम्बार्ड, अल्फा से हम निकल बम्बार्ड कर रहे हैं. इसी के टॉप में जब जाओगे तो हियर यू कैन सी द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन which is being bombarded to the copper. Here alpha is being bombarded to the nickel, here proton is being bombarded to the copper. तो दोनों को उसने सेम ही स्केल में प्लॉट किया. बट
The scale is different. Here the scale is 8, 12, 16, 24, something like this one, because energy is more and it is in mega electron volt. But here you can see it is half, half, half. Roughly half या उससे थोड़ा सा ऊपर 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33. Not 40, it is 33. यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे 5 है. तो this is less. Obviously प्रोटॉन को less चाहिए because उसका मास भी less है. तो उसका जो डिप्लॉय वेवलेंथ है वो भी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हो. एंड अल्फा के लिए मास ज्यादा है तो अल्फा को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट योर डिप्लॉय वेवलेंथ इज अराउंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस. ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट दीज अप, नाउ व्हेन यू सी एट दीज टू कर्व, ये लिखा है अल्फा एन और ये लिखा है पी एन. अगर हम रिएक्शन की बात करें, प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपका प्रोजेक्टाइल और आउटगोइंग पार्टिकल को मेंशन कर रहा हूँ. हियर लुक एट दिस वन, means this dashed line, which is this one, this is concerned with the proton bombarding to the copper, and this dark line is concerned with the alpha bombarding a nickel. दोनों के आप चेक करोगे तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है. मींस एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर क्रॉस सेक्शन हम मेजर कर रहे हैं ना, तो एट विच एनर्जी formation of this means outgoing particle should be a neutron and outgoing particle should be a neutron in both the cases. यानी आप किस रिएक्शन को भी चेक कर रहे हो, इस रिएक्शन को चेक करो, this particular line you are checking, कि ये मेरे प्रोडक्ट हैं और दूसरा एक ये है और फॉर्मेशन मेरा ये है. तो फॉर्मेशन में इस पे भी फोकस कर रहा हूँ, this one. And how it will depend upon the energy means if you have 20 as the energy for the roughly this one, this number है ना, 20 है ना, तो 20 अगर अल्फा पार्टिकल की 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो it will have a peak around that value. And if you check for the proton also, it is around 13 or 14, 12. यानी लो एनर्जी पे अगर आप रिएक्शन करते हो अपने पार्टिकल का, यानी आपका जब भी रिएक्शन हो रहा है लो एनर्जी केसेस में आपके इसके फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं. दोनों केसेस के लिए, दोनों रिएक्टेंट के लिए लो एनर्जी पे इस केस का फॉर्मेशन ज्यादा प्रोबेबल है. आप देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ से. आगे जब एनर्जी आपने इंक्रीज की दोनों केसेस में, यानी प्रोटॉन में भी और अल्फा में भी, तो क्रॉस सेक्शन हैज डिक्रीज्ड, इट इज गोइंग वेरी लो. कहाँ ये 80% या 70% के अराउंड है और अब ये हार्डली 10% के अराउंड रह गया. नाउ if you go for the next case, that is this one, which is second outcome, this one, so that will be means second और third more or less same ही energy पे focus कर रहे हैं. देखो second का ये वाला कर्व है, pn लिखा है ना, pn means this is the two outgoing particle, so they are forming at around a higher energy. 32 चाहिए अल्फा को और roughly 25 चाहिए प्रोटॉन को. Then only you will have this kind of peak for the outcome, where outcome is you have a neutron and I have a proton which is coming out, and copper 62 has been formed. So this is the curve concerned with this one, means higher energy पे जाओगे तो आपके ये फॉर्मेशन है. उसी एनर्जी लेवल के अराउंड भी means on this energy value जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, you can also find the third case. यानी थर्ड केस और सेकेंड केस में दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है आपकी. यानी हायर एनर्जी में आपका जो एंड प्रोडक्ट है दैट विल बी योर दिस वन. ये दोनों की प्रोबेबिलिटी मोर और लेस सेम है, मींस दे फॉर्म अराउंड 25 और फॉर दैट इट इज अराउंड हाउ मच, दैट वाज 32 और 33. तो दोनों केसेस में, तो व्हाई इट हैज बीन प्लॉटेड एंड व्हाई दिस ग्राफ इज सो इंपॉर्टेंट, तो दोनों को उसने एक स्केल पे ही प्लॉट किया है. अगर मैं डिफरेंट स्केल में प्लॉट करता तो ये दोनों ग्राफ मर्ज नहीं होते, ऐसा नहीं दिखता. मुझे लगता है कभी पता ही नहीं चलता कि भी अल्फा की क्या, एक लिखने की वैल्यू कि हम लिख दें कि अल्फा को 40 चाहिए तो हमारा ये फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोटॉन को ये होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा. हियर यू कैन इजीली सी
कि यस लो एनर्जी पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, हायर एनर्जी पे हमारे पास ये दोनों पॉसिबिलिटी है, that both can be formed. And in this range, when you are in this range, all the three can be formed. All the three are possible. And which will be the come out that you can relatively, means if you are at this particular value, let me just show you this one. At this particular value of energy for the alpha and around 17 for the proton, they both have same kind of probability. मीन्स इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के यानी Zn63 और N का फॉर्मेशन या कॉपर 62 एंड Pn का फॉर्मेशन, दे आर सिमिलर एंड दिस इज लेस लाइकली टू हैपन. यानी थर्ड वाला थोड़ा सा लो है, थर्ड वाले के लिए और हमें एनर्जी चाहिए सो दैट इट विल फॉर्म. बट अराउंड दिस बोथ कैन बी हैपन, एनीथिंग कैन हैपन. सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सो आइसोट्रोपिक थ्रू आउट द न्यूक्लियस. आप कहीं पे भी बैठ जाओ आपको पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ डीके प्रोसेस. This does not depend upon the initial angular momentum or energy conservation, something like energy conservation is there because compound nucleus जो form हुआ है उसकी energy थोड़ी सी ज्यादा है, but momentum का कोई conservation यहाँ पे play नहीं करेगा. So that will be momentum conservation play करेगा, but what is the state of this nucleus, compound nucleus, and what is the outgoing, उस पे depend करेगा. It will not depend upon the reactant. Is it clear to you? Things are clear to you? Or you have doubt, then you can ask, or if it is clear, then they can move forward. मार्च ऑन कर लेंगे हम आगे. मार्चिंग हमारी जारी जारी रहेगी. हम सिलेबस खत्म करने की ओर मार्च कर रहे हैं बड़े फास्ट वे में. हाँ, if it is okay, you have a doubt then please ask. अगर मैं कह रहा हूँ कि डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. We will go to the resonance reaction. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. Okay, so resonance reaction is a third kind of reaction, which is actually a class of compound nucleus reaction only. So first we will understand using a simple momentum and energy conservation and why it is called a resonance reaction. Okay, so पहले हम उस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा exact जो graphical way में कि what is the why the resonance of certain reaction is resonated. Let me just share the word file to you. Okay. And this is a class of compound nucleus only, and because the compound nucleus which is formed that can have a resonance. जो आपका compound nucleus form होता है ना, वो एक resonance form में formation होती है उसकी. So let us use a reaction, and that reaction is this one. A neutron is bombarding a uranium 238. And the outcome is your uranium 239. ठीक है, एक प्रोटॉन ऐड होगा तो 239 फॉर्म हो जाएगा, बट दिस इज अ वेरी अनस्टेबल. दिस इज अ कंपाउंड न्यूक्लियस व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड. ओके, then what we have to do, we have to write the energy and momentum conservation, that's all. We have to write that and we will see what the equation we are getting at the end. For ground state, q let me write as q not भी लिख देते हैं, but let me write in a q form only. mn mass of neutron product जो reactant आपके हैं plus mass of 238 uranium minus mass of 239 uranium ground state, not the excited state, it is ground state. तो यहाँ पे excited है but यहाँ पे हम ground state, यानी Q जो calculate कर रहे हैं, all the nucleus are in ground state, उसके लिए calculation कर रहे हैं. C square. And using the mass value from the book, you can easily calculate this number is around 4.80656 mega electron volt. ये वैल्यू रफली इतनी है. यानी अगर आपका न्यूट्रॉन 238 capture करता है, this is a capture reaction, so it just capture the neutron. So when this is capturing a neutron,
the ground state uranium-239 will be formed, and the energy which is released is this one. इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर आपका ये कैप्चर करता है तो. If I go into the momentum conservation, means I just make the neutron which is moving in this way with certain velocity or certain momentum, Pn लिख देते हैं उसको, and there is a uranium-238 and that is at rest. So P238 uranium is 0. So that is at rest. Due to momentum conservation, when this capture is happening, or when this is happening, then just after the capture, it will have certain momentum. The momentum को slow down होने में time लगेगा. So just after the capture, there will be a momentum for this particle also, which has been formed. So it means this one, black one. So when the black means uranium-239, when it is formed, that is in excited state, and it has certain momentum just after the capture. Okay. The nomenclatures and things are clear to you? Yes or no? ठीक है, हाँ ना बोलते रहो. ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहे हो सभी? हाँ. The momentum before the reaction and after the reaction, they has to be equal. Just after the reaction, this momentum must be equal to this one, because this one was not having any momentum. It means this is moving in this way, so this will also moving in this way with its own momentum, whatever the momentum, and that momentum is same. Obviously the velocity will be very slow, because it is very heavy atom of a heavy nuclei, and the neutron will have obviously the higher velocity because it is a light for the same momentum. Okay, now we can write the energy conservation. This is just only the Q value. Now we can write the energy conservation. The energy conservation means it's kinetic energy plus Mn C square plus M238 uranium C square must be equal to, just after the reaction, the formation of 239 uranium in the excited state, and plus mass of 239 uranium excited state and C square. This is the excited state mark. Okay. Now this can be written as 239 uranium star plus mass of 239 uranium ground state C square plus delta E. अगर वो excited state में generate हुआ है तो we can easily write this mass as this one, rest mass of a ground state plus how much excited state energy is there, delta E. And this is the total energy or total mass of the excited. तो excited state का mass थोड़ा सा heavy होता है with respect to ground state. तो ground state का mass ये रहा in terms of energy plus a little bit of energy which is the excited state energy. Okay. So Tn, अब अगर आप ये फॉर्मूला ये वाला और ये वाला एक साइड ले लो तो this is nothing but Q. Mn C square plus M238 C square minus Mn239 means M239U C square. If you take this to this side, so that is nothing but Q. ऊपर हमने लिखा हुआ है, and plus Tn हमारा पहले से यहाँ पे, and that will be equal to this which is formed just after the reaction. जो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, इसको हम यही लिख देते हैं स्टार में, because this one, so that will be equal to the momentum of the neutron. So we can write this one as Pn divided by 2m239 uranium. तो इसको हम Pn square, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को P square by 2m के फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड प्लस डेल्टा E. ठीक है, इज इट ओके? यहाँ तक ठीक है? मतलब if things are clear to you, then just tell me yes or no.
हाँ या ना कुछ बोलोगे तभी पता चलेगा। इतना शांत, अच्छा ओके, द स्माइली इज देयर, यू डोंट वांट टू talk to me but you want to have a thumbs up, okay I have seen। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मैं समझ गया। टी एन, बात करने में अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, कौन बात करेगा so Tn can be written as, just we can collect these things and you can write in this form, delta E minus Q and divided by 1 minus Mn divided by M239 uranium, and star लिख सकते हो, you can write star here because star और दोनों का मास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट a bit difference is there। ये इक्वेशन ठीक लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं अलजेब्रा मेरा बहुत खराब है, बिल्कुल अलजेब्रा तो है ही नहीं मेरे पास, बिकॉज आई हैव नॉट नेवर सीन अलजेब्रा अलजेब्रा मेरा खराब हो गया। जस्ट चेक, ये हमारा इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो डेल्टा ई माइनस क्यू एंड पी एन स्क्वायर, पी एन हमारा, अच्छा पी एन स्क्वायर मैंने कहाँ लिखा, नहीं लिखा, ओके यू कैन टेक दिस टू दिस साइड। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, अच्छा मैंने यहाँ स्टेप मिस किया है, यहाँ सिर्फ मास एम एन और सॉरी एम यू 39 और उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो दिस नंबर बिकम टी एन। तो टी एन को इसलिए मैंने ये 1 माइनस ये जो टर्म है ना, वो मैंने इसको इधर लेके आया हूँ और टी एन के साथ उसको कंपेयर किया, लेट मी राइट इट हियर ओनली, माइनस पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m 239u and multiply with mn and divide by mn. So this will be equal to Tn minus Pn 2mn. So that will become again a Tn and mn and M239u, which is a star star. And why we have took 1 minus this number, which is mn upon M239. वैसे number बहुत छोटा है because mn will be 4, around 4, and this will be 239. So that is a very small number. You can neglect that also. उसको भूल सकते हो. But here we have written that. So डेल्टा ई, अब हम डेल्टा ई लिख लेते हैं, मैंने टीएन के टर्म्स में लिख दिया था यहाँ पे, नाउ वी विल राइट इन डेल्टा ई टर्म्स, दैट विल बी इक्वल टू क्यू प्लस टीएन एंड 1 माइनस mn डिवाइडेड बाय M239u। स्टार लिख सकते हो या दोनों के मास नंबर, अगर स्टार नहीं लिखना चाहते तो दोनों के मास नंबर यूज कर सकते हैं, मींस mn यू कैन यूज एज 4 और mass of 239u you can as use at 239. This is our mass number which is nearest to its rest mass value, और rest में जो उसका mass होता है उसके, यानी जो आपका mass number होता है ना, उसके actual mass के आसपास के नंबर होता है, you can use that also, the fraction will be remains roughly same। Now what is the implication of this one, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक क्यू तो डिफाइंड है जो ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट का रिएक्शन है, यानी आपका अगर ग्राउंड स्टेट में यूरेनियम 239 फॉर्म होता है तो यू विल हैव दिस मच ऑफ क्यू, देन if you provide certain kinetic energy to the neutron, then add this number, means whatever the energy of the kinetic energy of the neutron is there, you know that because you have bombarded your neutron to the uranium and you also know the masses, so you can calculate this number, this can be calculated, that should match with the available delta E in the uranium 239। ये इक्वेशन ये बोल रहा है कि ये नंबर इसके इक्वल होना चाहिए। इट मींस इफ आई look at the energy diagram of your this is a ground state of uranium 239, so and all the excited state will somewhere here, तो अलग अलग डेल्टा ई, इसका डेल्टा ई 1 हो सकता है, इसका डेल्टा ई 2 हो सकता है, so that will be different number, okay, this is delta E3। so whenever you provide certain kinetic energy, if this equation is valid, then only the uranium 239 will be formed of a particular excited state। It means if your equation does not match, the neutron will not go inside the nucleus। भाई अगर कमरा खाली नहीं होगा तो किसी घर में घुसेगा कैसे कोई, और कमरा अगर 5th फ्लोर पे है और जो एंट्री करने आया है अगर उसने खाना ठीक से नहीं खाया, 4th फ्लोर पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो it cannot enter, it will go back, it will do certain other reaction। But
इफ द थिंग्स मैचेस, क्यू तो आपके पास पहले से प्रोवाइडेड है, क्यू इज द ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब ये अगर आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन को मुझे प्लेस करना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन जाएगा तो इट विल अप गो टू द सर्टेन एनर्जी वैल्यू। आपके पास ये पहले से ही पता है कि देयर इज अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, and any neutron, any nucleon, when you're going into the nucleus, when the nucleon is going into the nucleus, it will occupy certain state. ऐसे नहीं कि कहीं पे बैठ जाएगा, it has to, if its energy does not match with any of the state, it will not go inside the nucleus, तो capture will not happen। तो capture होने के लिए आपका ये इक्वेशन वैलिडेट होना चाहिए, यानी जो भी आपने काइनेटिक एनर्जी डिजाइन की अपने पार्टिकल की, और क्यू आपको पता है ग्राउंड स्टेट का, तो आपको मासेस भी पता है, just calculate this number. If this number matches with any of the state of the uranium 239, the capture will happen, and this is called a resonance। इन रेजोनेंस में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे क्या है, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा ई मैच करता है तो न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड। सो इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन of this kind of reaction, which is a resonance reaction, and this is Tn. So for certain Tn only, because अगर Tn की वैल्यू यहाँ पे डिमांड कर रहा है डेल्टा ई की वैल्यू, तो इट विल नॉट गो इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर Tn की वैल्यू से आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है या यहाँ पे आ रही है, तो इट विल गेट कैप्चर्ड। इट्स मीन व्हाट यू विल सी that there is a roughly zero cross section, and then at certain Tn you have a peak, then you go for zero, then again a peak. So where the energy level appears, you will have a peak. So this kind of, if you see a reaction cross section for any reaction, so that is a resonance reaction. So these are the allowed value of Tn for which the neutron will captured by the uranium. And for rest of the places, means if you find this, if you keep the Tn at this point, then it is not going to go inside the uranium, because उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, स्टेट ही नहीं मिल रहा है, तो जाएगा ही नहीं। उसको स्टेट मिलना है, उसका Q प्लस Tn और ये नंबर मिला करके इट हैज टू मैच विद डेल्टा ई। अगर मैच होता है तो इट विल गो इनसाइड द न्यूक्लियस, मैच नहीं होता है, इट विल डू सर्टेन अदर थिंग, इट विल जस्ट गेट स्कैटर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। So this is the difference of a resonance. This is a kind of a, okay, so let us end this class. मेरा सिग्नल भी थोड़ा सा लास्ट में शायद ऑफ हो गया था, so let us end this class and join in the tutorial class. Okay, तो मैं अभी बारिश के पास हूँ, छज्जे पे, इसलिए बारिश की आवाज भी आ रही होगी, so just we end this class. Okay, so join the tutorial, we will discuss the beta decay problems. Thank you for your thumbs up and smileys.